The National Education Policy 2020 envisions an educational system fashioned on the lines of India's linguistic, cultural, and artistic heritage. Promotion of Indian art and culture is a priority that will benefit not only the nation but also the individual. It is necessary to introduce students to their culture, which will enable them to have a sense of belonging and identity and will also help them value their culture and tradition. India is a country with a treasure of cultural heritage in the forms of arts, custom, literature, tradition, artifacts, and much more. This makes India one of the most visited countries for tourists who come to the country to experience the rich culture and heritage. This is why it is important to preserve the culture and wealth of India for the nation's identity and its economy. India is a country with languages changing every 15 to 20 kilometers according to the native communication style. In order to promote art and culture, it is very important to promote Indian languages. People in India talk to each other in their native language, which also shows their culture and tradition through their language. Without the promotion of languages, it is not possible to promote art in the form of film, plays, literature, music, etc. The promotion of Indian languages will be integrated into the school and higher education at every level. In order to help students learn these languages, there will be ensured availability of high quality learning material in the form of workbooks, textbooks, videos. Moreover, the language must have a consistent update of their vocabulary in the dictionary so that students can be provided with education in terms of the latest topics and issues of the country. The academics will be implemented for all the languages as determined in the 8th Constitution of India, for which teachers with high-level language proficiency of the language will be employed. Moreover, academicians will also consult with each other to prepare a language dictionary for the respective languages, which will be used to study and for use in education, writing, journalism, and more. The dictionaries will be available in the form of a book, print, as well as web format. Students will be provided with scholarships based on the language. Various awards and incentives will be provided for outstanding poetry and prose in Indian languages in terms of various categories, which will be established to ensure vibrant novels, poetry, non-fiction books, journalism, textbooks, and other works. It is also important to emphasize the deliverance of education in different languages, which will help the students to adapt to multilingual education. Moreover, multilingual education must be improvised in order to provide language education, not only in terms of literature, grammar, and vocabulary of the language, but also to interact with the students in the same language. Through the policy introducing students to the rich diversity of India will be emphasized, which will also include enabling students to simple learning activities such as touring different parts of the country. This will not only help the students learn about their diversity, traditions, culture, and knowledge of different parts of India, but also boost Indian tourism. The NEP 2020 also focuses on the translation of various written and speaking learning materials to the public in various Indian and foreign languages. An Indian Institute of Translation and Interpretation will be established, which will be responsible for translating the learning materials and providing multilingual language and subject experts. The general public possessing a high-level knowledge of the languages and culture can be invited to share their stories about India, different languages, rich culture, and heritage. Schools can have video conference with the native speakers and can upload online to access by all. Hands-on activities to have better understanding of the concept through multi-sensory approach. Greater emphasis on music, art, and craft throughout all level of the school. Conducting more experiential language learning, hiring outstanding local artists, art and craft persons as a guest faculty.
promoting multi intelligence, logical, mathematical, linguistic, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic intelligence. Further, it is also proposed that a new institute for languages will be established. National Institute for Pali, Persian, and Prakrit will also be set up within a university campus. Similarly, initiative will be carried out for institutes and universities studying Indian arts, art, history, and ideology. Research for outstanding work in all these areas will be supported by the NRF. संस्कृत को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्कूल कॉलेजेस की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया है। संस्कृत की पौराणिकता। संस्कृत हमारी संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए संस्कृत को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। महत्ता के बारे में कहें तो कई पांडुलिपि, हस्तलिपि, प्राचीन ग्रंथ और हमारे अमूल्य ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण इत्यादि की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है। संस्कृत भाषा हमारी समाज की धरोहर है, जिसे हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कड़ी मेहनत से बनाया था। इस भाषा को पढ़ना, समझना और जानना हर देशवासियों का कर्तव्य है। मंत्रोच्चारण का प्रभाव। मंत्र की ध्वनि का कंपन रेडियो तरंगों के समान है, जिसके निरंतर उच्चारण से एक दिव्य शक्ति का निर्माण होता है। यही दिव्य शक्ति बच्चों के मस्तिष्क में अतीन्द्रिय शक्तियों का द्वार खोलने में सहायक है। जैसे सूर्य से संबंधित कोई मंत्र है, तो उसके उच्चारण से एक विशेष ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है और वे कंपन आकाश तत्व के माध्यम से कुछ ही क्षणों में सूर्य तक पहुंचकर लौट आते हैं। लौटते समय उन कंपनों में सूर्य की सूक्ष्म शक्ति, तेजस्विता और प्राणवत्ता विद्यमान रहती है, जो पुनः साधक के शरीर से टकराकर उसमें उन गुणों का प्रभुत्व बढ़ा देती है। संस्कृत की वैज्ञानिकता। संस्कृत के साहित्य में अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का भंडार है। इसके अध्ययन से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। जैसे वैमानिक शास्त्र, इसमें 9 प्रकार के विमानों के विषय में बताया गया है। जैसे हवा से चलने वाला विमान, चुंबक से चलने वाला विमान, सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान इत्यादि। आज एलोपैथिक में प्लास्टिक सर्जरी का उद्गम सुश्रुत संहिता, महर्षि चरक की चरक संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा के प्रति विदेशी जागरूकता। नासा के वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। संस्कृत से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जा सकता है। जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। विद्वानों के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व की 97% भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव है। संस्कृत भाषा देश के विकास में सहायक है। हमारे भारत जैसे विकासशील देश के संपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक देशवासियों में संस्कृत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे उसे हमारे साहित्य, संस्कृति एवं संस्कारों का ज्ञान हो और वह देश की प्रगति में सहायक हो। धन्यवाद।